आने वाला कल कैसा होगा, भयभीत रहता है। जो खुशी इस पल में है उससे क्यों है अनजान तू, दुख में खुशी, खुशी में आनंद लेकर देख तू, कहाँ भटक रहा है, कौन है तू, अपने आप से पूछ, और कुछ करने और कुछ पाने से पहले जान ले अपना वजूद। Have you liked it? Have you liked it? Yes sir. अगर आपको पसंद आई तो आप थम्स अप करिए, जस्ट थम्स अप। So my dear friends, I'm sure you must have liked the session and you must have taken some takeaways that there is an alignment required in our body, mind, breath and soul. And once you maintain this alignment, you can reduce your stress level drastically. I'm telling you, drastically you can reduce your stress level. And second thing I discussed with you, that keep away from any fear or anxiety and don't procrastinate the things which you are supposed to do today. So if you follow these simple principles, I think you are stress-free already. You don't have any stress at all. Can you hear me now? Yes, sir. Can you hear me? Yes, sir, we can hear you. Okay, Yes, great. yes, sir, we can hear you. Yes sir, we can hear you. So, yeah. So that's all from my side. I think it's time for question answers. We can have some questions and I can answer them. Friends, what a wonderful session. Stress कितना कम हो गया है सब लोग का? हाँ? चला गया अभी तो stress सबका. Hope enjoying everyone. Yes sir, we enjoyed it a lot. Any doubts to Garg sir? Yeah, I want everyone should ask this question. Yes, there is one question, sir, from Gaurav Bhatia. How to avoid short-term comfort? How to avoid short-term comfort for long-term success? Short-term comfort for long-term success. You already know this. आपको पता ही है कि short-term comfort आपका long-term success को एक barrier है. Yes or no? Yes, yes. When you go for any short-term comfort. एक example से समझाओगे तो अच्छा रहेगा. By one short example, if possible. Yeah. See, I will give you example of health, right? I like pizza very much, right? Pizza gives me short-term comfort. It gives me good taste, good thing, right? But if I eat every day this pizza. Hello. Anil sir, you there? Hello. रजनीश सर, आपको कोई क्वेश्चन है क्या मेडिटेशन के बारे में? अरे सर ने तो जोरदार मेडिटेशन किया है. हाँ, रजनीश सर बहुत एंजॉय किया है. हाँ, सब लोग से ज्यादा रजनीश सर का जो मेडिटेशन था सुपर्ब था एकदम. यस यस यस. हाँ सर, he has enjoyed thoroughly. हाँ पूरा. See, I know from Rajneesh our managing committee one person doing pranayam regularly, and that is our own Rajneesh sir. बराबर है रजनीश सर? Not able to hear you. आपका म्यूट पे है. म्यूट है सर. सर आवाज मेडिटेशन करने के लिए फ्रेंड्स प्लीज डोंट गो अवे. आई गेस स्पीकर का कुछ डिस्कनेक्शन हुआ है. ओके, he will surely come in a minute's time. Yes sir, speaker is back. Yes sir, he's back. No, still he is not seen. Yes. Yeah, sorry. नहीं, उनका दो है. Yeah. No issue sir. We were you had informed us कि थोड़ा technical issue कुछ problem चालू है. Because there was a certain power off in my building. No issues sir. Please. Yeah. So can I expect more questions? Yeah. Sir, एक question का आप example दे रहे थे actually. वो pizza का example चालू था अपना. हाँ, so pizza का example was there that if you continue to eat pizza, it will give you short-term comfort, but in long run, it will affect your health badly.
and the consequences you will have to face after 20 years or 30 years or so on. Right? Smoking, you smoke, it gives you short-term comfort. Oh my God, I like smoking, but it can affect your body in long run. You sleep late, you get up at 10 o'clock in the morning, it gives you short-term comfort, but it affects your body in long run. So there are thousands of examples which give you short-term comfort, but it can affect your body in long run. And if you are aware of it, I think you can correct it immediately. Since you are already aware of it, I'm happy that you are aware of it. If short-term comforts are not good for you, that awareness itself will be giving you signal to your mind. No, मेरे को नहीं करना है ये short-term comfort में जाऊंगा तो मुझे long-term इसका consequences रहेगा. That awareness itself will keep you alert. Right? Correct. Right? Dr. Garg, it was a wonderful lecture. I just wanted to ask you one question about the pranayams. Can I? Yeah, please tell me. Yeah, tell me, sir. Sir, is there a schedule of this pranayam for how much time we should do this pranayam? You have shown the technique very nicely. Means actually, I also attended the beginners course of Sri Ravi Shankar ji, and Great, it was wonderful. Yes, sir, it was great, wonderful. great. It was at Mulund, which I had attended, and Bhastika pranayam, and this I have learned it very nicely. Oh, very Very good. Very, this thing. So, very good. Fantastic. Yes, sir. Yes, sir. And can you tell the participants about the tenure for what time they should do this pranayam? See, I'll tell And you. up to how many say I'll tell you. The best is if you can spend 1 hour every day in all 4 things. 15 minutes physical exercise. Yes. Right? 15 minutes pranayam. Correct. Or 20 minutes pranayam. 10 to 15 minutes breathing exercise. And 15 Correct. minutes to 20 minutes meditation. So these Correct. 4 tires need 4 alignment parts. So equally you have to divide this time 15 minutes. That will be great. That will really, really change your life. Your stress will not touch you at all. Correct. Because And sir, about the पता नहीं है बराबर है बॉडी को क्या चीज की जरूरत है हमको जानते नहीं हम लोग शायद किसी ने बताया नहीं इसलिए हमने जानने की कोशिश नहीं करी या इग्नोरेंस में वो रह गया हमसे कोई ना कोई बात तो हुई है करेक्ट सर एक और चीज आपने जो अच्छी हाँ यस सर कंटिन्यू सर हाँ आप बोलिए सर सर एक चीज आपने और एक अच्छी बोली है कि अपने बॉडी की बहुत अच्छी तरह से ये करो आई थिंक स्टूडेंट्स शुड स्टार्ट टॉकिंग टू देयर बॉडी सी जो चीज उस बॉडी को हर्ट करती है वैसी चीज हमको एब्स्टेन करना चाहिए जैसा आपने कहा पिज्जा इज वेरी गुड व्हेन इट एंटर्स द माउथ करेक्ट ना बट अल्टीमेटली इट इज हैविंग इट्स ओन इफेक्ट फॉर दैट मैटर ऑल द फास्ट फूड सो आपने बहुत अच्छी बात कही थी कि इस लॉकडाउन में अपने जबान पे कंट्रोल रखना चाहिए मींस व्हाट वी ईट व्हेन वी ईट हाउ मच क्वांटिटी वी ईट बिकॉज़ अल्टीमेटली दिस इज ऑल गोइंग टू ऐड टू द स्ट्रेस एंड एवरीथिंग ना एक्चुअली खाने का भी स्ट्रेस होता है ना सर मैं आपको यही बोल रहा हूँ दिस लॉकडाउन पीरियड इज नॉट फॉर ईटिंग सो मच ऑफ फूड और कुकिंग सो मच ऑफ फूड एट होम है ना दिस लॉकडाउन इज टू टेक केयर ऑफ योर बॉडी reduce your weight by 5 kg next 10 days this lockdown opportunity to correct the things which you are not able to correct during your busy schedule आपका busy schedule है आपको जाना है ऑफिस जाना है ये जाना है sometimes you cannot avoid but when you are at home there is no compulsion there is no compulsion on you आप कुछ भी करके अपना सब कुछ कर सकते हैं because you are at ease everything is under your control आप अपने घर में everything is at your disposal when you are out of your home things are not at your disposal sometimes you are supposed to eat you are not which you don't want to eat अभी मुझे भूख लगी मैं किसी रिमोट एरिया में हूँ वहाँ पे वड़ा पाव के अलावा कुछ मिल नहीं रहा है so I'm supposed to eat that but when you are at home things are at your disposal yes yeah and so a wonderful opportunity given by yes sir please sir there are two more questions sorry yes so 2 more questions from the participants yes sir one question is from Sachin Mishra if we feel lazy how to overcome with it see I gave you the example of this procrastination आपने वो example सुना क्या I'm telling you again we are sleeping on our bed the atmosphere is cool our bed is warm we want to get up
Physically getting out of the bed is just 3 steps. One leg, second leg, and get up. But deciding to go out of the bed, this laziness is in our mind. The moment we decide we should get out of the bed, we are out of the bed. हमारा माइंड हमारे कंट्रोल में नहीं है, यही प्रॉब्लम है. लेजीनेस क्या है? हमको मालूम है ये नहीं करना चाहिए, फिर भी हम कर रहे हैं. मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था अलार्म का. When we set the alarm, we hit the snooze button. What this indicates? This clearly indicates we are lazy person. When we are hitting snooze button, this indication itself is enough for us to know that we are a lazy person. So this awareness, I am a lazy person, and this laziness has affected my life so badly. I have paid a big price for this laziness. I have faced so many consequences of this laziness. We are all literate people. We are all, intelligent people. Once we are aware of it, we should get rid of it. तो आपको डंडा लेके थोड़ी आपकी लेजीनेस दूर करेगा. आपको अंदर अवेयरनेस लानी पड़ेगी. यस, मैं लेजी हूं और मुझे लेजीनेस दूर करनी है. दैट्स ऑल. इस क्षण आपने सोचा इस क्षण दूर हो जाएगी. तो मैं बोलता फिजिकल एक्सरसाइज ये सब हम नहीं करते ना, इससे भी लेजीनेस बढ़ जाता है. हमारा वेट बढ़ता है, पिज्जा खाते हैं, रात में 12 बजे खाना खाते हैं, सो जाते हैं, सुबह लेट तक उठते हैं. सब लेजीनेस को इनवाइट करता है. ये जो 4 चीजें मैंने आपको बताई, अलाइनमेंट, ये आपने किया तो सारी प्रॉब्लम सोल्यूशन है. No medication is required. Nothing is required after that. I'm telling you. The solution has been given by me already. So similar in that respect only, yes, there is another question from Srivastava. Yes, sir. Sundar. How to overcome procrastination? Yes, that is a very good question, I think. That is a very, very good question. See, the procrastination, it's not a tendency. I'm telling you, it is a disease. So how to handle procrastination, that is very important. I'll give you 2-3 things. Number 1, develop a tendency in our mind. Let me do it now, do it now, do it now, do it. मुझे ये काम अभी करना है. वो एक कहावत है, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, परले बहुरी करेगा. जो कल के लिए टालते हैं, वो कल का काम हमें आज करना है. आज के काम को कल के लिए टालना है. जो काम हम कल करने वाले हैं, वो हमें आज करना है. Do it now. That is number 1. Number 2, do the most difficult task first. Procrastination क्यों होता मालूम है? Because we are not comfortable doing something which we don't want to do it. We are not comfortable. So we keep on avoiding it. हमें comfort नहीं है, हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो हम उसको avoid करते हैं. तो क्या करना, जैसे मैंने आपको example दिया था, जो tough subject है, वो हम पढ़ना avoid करते हैं. So do the most difficult task first. Rest is easy. अगर हमने tough काम को पहले कर लिया, तो बाकी सब तो easy है ही. तो पहला चीज मैंने आपको बताया, do it now, number 1. Number 2, develop a tendency, do it now. Number 2, do the most difficult task first. And number 3, follow the salami principle. कौन सा principle? Salami principle. Suppose you want to eat the cake. Can you eat the whole cake at a time? No. You cannot eat whole cake at a time. You have to cut the cake into the pieces and eat one piece at a time. So if you have so many things to do, आपको 10 काम करने हैं. You have to prioritize the things. You cannot do all the things together. Just do one thing at a time. जैसे एक केक का पीस हम खाते हैं, वैसे एक काम को हम पहले करें, उसको फिनिश करें, फिर दूसरा काम लें, फिर उसको फिनिश करें. प्रायोरिटाइज करें चीजों को. एक लिस्ट बनाएं, हमारे कंप्यूटर पे लिस्ट बनाएं एवरीडे, TTD, थिंग्स टू डू लिस्ट. आज हमें क्या क्या कार्य करना है, उसकी एक लिस्ट बना लें, तो माइंड पे प्रेशर चला जाता है. जो चीज माइंड से हम कंप्यूटर पे शिफ्ट कर देते हैं, माइंड हमारा खाली हो जाता है. सो चीजों की लिस्ट बनाए, एक एक चीज को करते चले जाए, और उसमें ध्यान रखिए कि डिफिकल्ट चीज को पहले कर. तो प्रोक्रेस्टिनेशन चला गया. प्रोक्रेस्टिनेशन माइंड में है. एक्शन लेते से प्रोक्रेस्टिनेशन चला जाएगा. टेक एक्शन. Got the answer? Are you happy with the answer? Yeah. Yes, please, sir. Very good, sir. And the person who had asked the question is himself satisfied. Oh, perfect. Very good. So friends, any more doubts? Still we have 8 minutes to go. Make Yes, exercise. sir. One more question. Yeah, during lockdown, sleep schedule is totally disturbed. How to fix it? Who has disturbed it? Who has disturbed it, first of all? Who is the culprit here? The culprit is me. Culprit is me. My mind. मेरे माइंड
मैंने इसको डिस्टर्ब किया है ना, तो जिसको डिस्टर्ब मैंने किया उसको Exactly. दूसरा कैसे सुधारेगा? I have disturbed my own schedule. I used to get up early in the morning. है ना? अभी लॉकडाउन है, प्रोक्रेस्टिनेशन आ गया मन में, सोए पड़े रहे हो. किसने शेड्यूल डिस्टर्ब किया है? अगर डिस्टर्ब आपने किया है तो उसको दूर करने को दूसरा बंदा नहीं आएगा. प्लीज सर, एक चीज ध्यान रखो. प्लीज टेक द ऑनर्स ऑफ योर लाइफ नाउ इन योर हैंड्स. आपके जिंदगी की जिम्मेदारी आप अपने हाथ में लेना सीख लीजिए प्लीज. Everybody is adult now. Everybody has crossed that adolescence stage. We are no more child. We are no more children. We are all adult people. We are matured. We know what is good for us, what is bad for us. Until and unless we take the ownership of our life cannot change, my dear friends. We still want to depend on our parents. We still want to depend on our wives or husband or whatever. Our life cannot grow. Until and unless we take a call, this is my life. I want to grow in my life. I want to leave all bad habits. From today onwards, your life will transform from today onwards. आप चाहते आसमान में पहुंचूं, लेकिन बिस्तर से उठना नहीं चाहते, तो आसमान में कैसे पहुंचेंगे? आसमान में आप तभी पहुंच सकेंगे जब आप बिस्तर से उठे, एक्शन ले. विजन विदाउट एक्शन इज इल्यूजन. विजन विदाउट एक्शन इज इल्यूजन. विजन विद एक्शन इज कन्विक्शन. हम विजन की बात करते हैं. विजन अरे विजन क्या है? अगर एक्शन नहीं लिया तो विजन एक इल्यूजन है, अगर एक्शन लिया तो विजन एक कन्विक्शन है. हम बड़े बड़े सपने देते हैं, ड्रीम. वी ड्रीम बिग. माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको ड्रीम्स के ऊपर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलता हूं. ड्रीम्स आर नॉट दोज which we see when we are sleeping. Dreams are not those which we see when we are sleeping. Dreams are those which don't allow us to sleep. सपने वो नहीं होते जो हम सोते हुए देखते हैं दोस्तों. सपने वो होते हैं जो हमें सोने नहीं देते. तो सपने देखो और उन सपनों को पूरा करने के लिए सार्थक प्रयास करो. अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी आप खुद ले लो. Stop depending on your parents. Stop depending on anybody else. मेरी जिंदगी है, मुझे आगे बढ़ाना है. मैं आज से अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी लेता हूं, तो सुबह जल्दी भी उठूंगा, गंदी आदत भी छोड़ूंगा, सब कुछ होने लगेगा. जब तक ये जिम्मेदारी हम खुद नहीं लेंगे, कुछ भी हमारी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला नहीं. मेरे जैसे आप 1000 वेबिनार अटेंड कर लीजिए, ट्रांसफॉर्मेशन जिंदगी में आ ही नहीं सकता, क्योंकि हमने जिम्मेदारी लिया ही नहीं. We have to take the honors of our life. That's the solution. Are you getting my? Are you satisfied with me? जिंदगी की जिम्मेदारी ले लो. ये जिंदगी मेरी है, मुझे इसे आगे बढ़ाना है. और देखो, अकेले आए थे, अकेले जाना है. जितने भी मिले सब बीच में मिले हैं. तो इनसे हमें ज्यादा उम्मीदें नहीं रखनी है. हमें अपनी जिंदगी को खुद संवारना है. मुझे खुद अपनी जिंदगी को संवारना है. बस जिस दिन आपने सोच लिया, आपकी जिंदगी का ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो गया. जब आप डिपेंड करते हो तो जिंदगी आपकी आगे नहीं बढ़ सकती है. बैरियर्स आते हैं लाइफ में. जब आप खुद सेल्फ सफिशिएंट, सेल्फ एस्टीम जिसको बोलते हैं, अपने पांव पे खड़े हो जाइए. प्लीज स्टैंड ऑन योर ओन फीट. दूसरों की लकड़ी का सहारा छोड़ दीजिए. स्टैंड ऑन योर ओन फीट. यू विल फाइंड योर लाइफ विल ट्रांसफॉर्म. जितनी जिम्मेदारी आप ज्यादा लेते, रेस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स पावर. नो रिस्पॉन्सिबिलिटी ब्रिंग्स कंप्लेंट. जितनी ज्यादा आप जिम्मेदारी लेते हो, उतने पावरफुल आप हो जाते हो. जब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हो, आप कंप्लेंट करते हो, आप शिकायत करते हो, आप ग्रजेस करते हो. तो जिम्मेदारी लो दोस्तों. देखो जिंदगी कैसे, जिंदगी ऐसी है, खुशबू की माफी बहकती है ना. आपको फूल के जैसा बनना है. फूल क्या करता है? फ्लावर इज गिविंग फ्रेग्रेंस विदाउट एनी कंडीशन टू एवरीवन. अनकंडीशनली वो फ्रेग्रेंस देता रहता है सबको. वो ये नहीं बोलता कि मैं हिंदू को दूंगा या मुस्लिम को दूंगा या इंडियन को दूंगा या जर्मन को दूंगा. He is giving fragrance. You should be like a flower. Give fragrance to everyone unconditionally. Your life will become beautiful. I'm telling you. Are you happy with the answer? Yes, sir. Absolutely. तूच आहे, तुझा तू शिल्पकार आहे. Old Marathi say for same. Yes, sir. Friends, from the Marathi say, that's what I wanted to say. What sir has rightly said, you are you, this you in yourself, that you yourself faith
that you in yourself is very much important. Perfect. If you define yourself, you will definitely achieve your goal. देखिए So how was the सिंपल सी friend? बात एक बोलता हूँ, एक जिसको बोलते हैं कि अगर हमने सोच लिया, if you think you can, you can. You will. If you think you can, you can. If you think you cannot, you cannot. अगर आपने सोच लिया आप किसी काम को कर सकते हो, आप कर लोगे. आपने सोच लिया आप नहीं कर सकते तो कभी नहीं कर पाओगे. तो ये जो आपका जो सेल्फ एस्टीम है, यही सब कुछ है आपकी जिंदगी को, यही आगे बढ़ाता है, यही नीचे गिराता है. आपको संकल्प लेना, आपको जिम्मेदारी लेनी, आपको ऑनरशिप लेनी कि मेरी जिंदगी है, मुझे आगे बढ़ाना. भाई मैं कब तक दूसरों की बैसाखी पे चलता रहूंगा? हाउ लॉन्ग आई विल कीप ऑन डिपेंडिंग अदर्स? मेरे पेरेंट्स, मेरे सिस्टर, मेरे ब्रदर, नो आई डोंट वांट देम. आई वांट देम फॉर लव एंड अफेक्शन, बट आई एम नॉट गोइंग टू टेक हेल्प व्हिच विल कम एज ए बैरियर इन माय लाइफ. मुझे दूसरों की बैसाखी पे नहीं चलना. आई वांट टू स्टैंड ऑन माय ओन फीट. आई वांट टू रन ऑन माय ओन लेग्स. दैट्स ऑल. दैट्स द लाइफ. दैट्स द लाइफ. Yes, sir. Any more questions? Wonderful session, sir. Yes, sir. Yes. Sir, आप जैसे कहते हैं ना कि you cannot think outside which is not there in inside you. Quality of your thinking determines the quality of your life. तो आप अच्छे हैं तो आप मेरे बारे में अच्छा सोच रहे हैं. नहीं, that is true. It was really inspiring. बहुत inspiring था. No, that is. No, seriously, all these things are very much inspiring. Rather, from this inspiration, I just remembered one of the stories of Ramdas Swami. Yes, sir. Well, there was one fellow who came to Samartha Ramdas Swami asking Yes, that Samartha, I want to leave this drinking habit, but I'm not able to. What to do? So he said, you come on next day, you will get the answer of it. And the next day when he came, he saw Samartha Ramdas Swami. He was just मिठी मारली होती त्यांनी झाडाला. Okay, so he was just entangling himself to the tree, and he was asking that, please ask someone to just leave me from this tree. This tree is not leaving me. Please help me out. Everybody was shocking that what Samartha Ramdas Swami is doing. Means we are not able to understand what he is doing exactly. He can just simply remove his hand and he can remove selfly he can just help himself. Why he is not doing so? So Samartha Ramdas Swami that time says, see, this is what I wanted to tell you guys. Ki the tree is not holding me. I was holding that tree. Similarly, this bottle is held by you guys. The bottle is not holding you. So this is the best way to just leave your drinking habits. So similarly, this you example is ki you in you. If you can, you will definitely. Sir, it was really pleasant to have you in our session and remove the stress of the people, which is very much important when we study. Means when we used to study and we used to have stressed out of fear. ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? फेल होने वाला है ना. उससे ज़्यादा कुछ नहीं है. सिर्फ एक एटम और देना है. उससे अच्छा और कुछ होने ही नहीं वाला है. So why to worry of failing? If you are worrying that you will fail, then don't give any exam. Don't give any exam. If you have mind that if I fail and I want to pass, that's what I want to give exam. No, please don't give. You just have to give exam, leave rest on your God, everything. And sir has given so many examples that the way the body needs, the mind, what mind needs, that's what we have to do. That's what exactly we have to follow. If you want your mind to be in your control, that's what you have to do exactly the way sir has rightly and precisely by quoting each and everything of his whole life for us, for your betterment. Exactly. Okay, sir, once again from all Thane Tees, Thane Vikasa, from students, we would like to thank you. And really, it was a wonderful session. And it will be one of the mesmerizing ones. Thank you so much, sir. Thank you so much. And thank you, Anil sir, for giving me this opportunity. And I would love to have an association, a long association with you. Yes, sir, definitely, sir. Definitely, sir. I can speak on many topics. So whenever you want, I have spent 34 years in corporate life.
I'm being known as sales guru also. So whenever you want, I'm always available at your service, sir. Yes, Always. Thank you, sir. definitely. Thank you. Means- Thank you. Thank you. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, friends. Once again, because of you, all this success of this today's webinar. Thank you for you to all guys. Thank you. Thank you, So sir. Great Thank you. program. Thank you. Thank you, Rajni sir. Thank you, Yogesh sir. Once again, Thank Yogesh, you. Thank you. Yes. for always being supportive and part of Nahi, this Thane Vikasa. Nahi, Thank nahi, you, nahi. sir. It's a Thank you, pleasure. Rajni sir. Thank you, sir. Thank you. Thank you. Yes, Shivam, we can just end this webinar. Yes, sir. Can we end? Yes, yes, we can end. Sure, sir. Then we're good to go. Sir, एक और चीज बोलना था. आधा सेमिनार अनिल हाँ, सर बोल. के पास है. आधा सेमिनार मेरे पास हाँ. है. मतलब the Q&A session and last का थोड़ा बहुत session. So what we'll be Okay. doing is पहला we'll be uploading 2 videos on YouTube. The first video हाँ, will be ठीक है ना, no primarily issues on, ना. yes sir, the first नहीं, video what will you be, do is part 1 part 2 करके कर दो ना. No issues. That will be much better. Uploading भी fast हो जाएगा. ठीक ठीक है है? सर, चलेगा. Yes sir. Part And 1 sir, part 2 करके कर देना. Okay? yes and अभी शिवम yes sir. अपना वेबसाइट का किया है कुछ आप लोगों ने? सर See, there is a ready-made website which is there. yes sir. वो पहलवानी सिर से कोऑर्डिनेट करना है आपको. yes sir. पता चला मेरे को. मैं अभी पहलवानी सर से बात करता हूँ as soon as possible and I'll get the work done. See what will happen, Shivam. This will be a very good platform for Thane branch to launch. Actually, this website has got many aspects. Means if the students need some employment, placement, even after they complete their articleship, or there are many features. Actually, which I cannot describe it right now. Also, actually, it will be a treat for the students of this area. Actually, and it will be in the this